Sir, when you started discussing what is bookkeeping, you said bookkeeping is an art, it's a science for recording financial transactions systematically and regularly in books of accounts. So, sir, when you said books of accounts, it is understood that we don't talk about one book or we don't discuss here one type of book, but more than one. Yes, you're absolutely right. So, in principle, we will be maintaining two sets of books. First is called journal book. The second is called ledger book. Whenever a financial transaction will take place, which we will come to know from the documentary evidence provided to the bookkeeper, accountant, first he will record it in a book called journal book. Because we record it in journal book for the first time, this journal book is also known as prime book, first book. So what is journal entry? If someone asks you, recording a financial transaction in journal book is called passing a journal entry. रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. Why journal book is known as prime book? Yeah, because it is the first type of book. फर्स्ट टाइप ऑफ बुक. कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा बुक्स में तो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइम बुक. ना although journal book is the prime book, it is not the only book that we will maintain. We are going to maintain more than one. I said we will be maintaining two sets of books. The other is called ledger book. इसमें be careful, pronunciation में D नहीं आएगा. It is not called ledger, but spelling में D आएगा. So it is ledger book. Of course, this is called secondary book. First was prime, second is secondary book. तो सर हम पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, उसको हम बोलेंगे जर्नल एंट्री. तो लेजर में हम कहां से रिकॉर्ड करेंगे? फ्रॉम जर्नल बुक. तो सब जब हम ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइडेड टू अस, इट कुड बी परचेस बिल, इट कुड बी सेल्स बिल, इट कुड बी परचेस रिसिप्ट, सेल्स रिसिप्ट, it could be challan, it could be any kind of documentary evidence in support of the financial transaction. Based on that source, accountant will come to know that this particular financial transaction has taken place. अगर उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो accountant will not consider it as a financial transaction. It will not pass the journal entry. Any financial transaction recorded in journal book without supportory documentary evidence can be treated as bogus transaction. So what is the source for us to pass the journal entry in journal book? Documentary evidence. उसको बोलते हैं voucher. So for every single financial transaction that you record in books of accounts, जिसमें पहला बुक है जर्नल बुक, उसके लिए उसका वाउचर होना जरूरी है. वाउचर यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है. नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, देयर वोंट बी एनी एंट्री इन जर्नल बुक. मैं लास्ट टाइम आपको रिपीट कर रहा हूं. फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इफ यू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यू हैव टू रिकॉर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन जर्नल बुक. दैट्स व्हाई वॉट एवर यू रिकॉर्ड इट इन जर्नल बुक is called passing journal entry. Am I very loud and clear? Yes. Now after recording it in journal book, we also record it in ledger book. जब हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं तो हम जाके वापस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ढूंढते नहीं है, हम जर्नल एंट्री को देख के लेजर में रिकॉर्ड करते हैं. उस प्रोसेस को ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन लेजर बुक फ्रॉम जर्नल बुक, ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन लेजर बुक फ्रॉम जर्नल बुक, लेजर में रिकॉर्ड किया जर्नल से, लेजर में रिकॉर्ड किया जर्नल से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग.
So mind it, I have mentioned here types of books of accounts: journal book, prime book, ledger book, secondary book. Then I've clearly mentioned recording a financial transaction in journal book is called passing journal entry. This will be based on documents, that is documentary evidence. Then I have mentioned after recording in journal book, that is prime book, we will also record it in ledger book from journal book. Now we don't again go back to the documentary evidences. This process of recording in ledger book from journal book, this process of recording it in what? Ledger book from journal book is called ledger posting. So कोई कुंचम नहीं होना चाहिए आपके माइंड में. What are the sources? I mean, based on what you record in respective books. हम record करते जर्नल में based on the documentary evidence, that is voucher, and हम लेजर में record करते हैं from the journal entry in journal book. So लेजर में record करने के लिए मेरा source क्या है? Journal book. और जर्नल में record करने के लिए मेरा source क्या है? Documentary evidence. Clear? More to come. See you.